नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्री रोग लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है वैद्य विनायक लेले सर, सिंधुदुर्ग सावंतवाड़ी महाराष्ट्र से। और आज का हमारा अलग टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी को लेकर, न्यूरल डेवलपमेंट, जेन्युइन गर्भ संस्कार एंड रोल इन फिटल न्यूरोलॉजी। एक अलग टॉपिक पे सर आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस सत्र में। तो सबसे पहले धन्वंतरि वंदना से इस सत्र का आरंभ हम करते हैं। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का। भगवान धन्वंतरि एवं हमारे सभी आचार्यों को नमन कर इस सत्र का आरंभ हम करते हैं। तो हमारे साथ आज है महाराष्ट्र से सिंधुदुर्ग सावंतवाड़ी से वैद्य विनायक लेले सर, जो कि एमडी चंद्र स्त्री रोग में एमडी है और सर काफी सालों से स्त्री रोग में प्रैक्टिस करते हैं। और इसी के साथ सर का काफी अभ्यास है इस विषय में, न्यूरोलॉजी को लेकर, ब्रेन डेवलपमेंट थ्रू द फिटल डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से आज के इस सत्र में एक खास तौर से सर जुड़ चुके हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर का आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है सर, नमस्कार आपको। तो मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्र को आरंभ कर सकते हैं। Okay, thank you very much. Thank you. I thank Ayush Darpan and specifically Dr. Shilpa Yerme madam for giving this opportunity to me. And I'll start in Hindi. My Hindi is very horrible, but let me try it. Okay. No issue, it's okay. तो गर्भ संस्कार, जेन्युइन गर्भ संस्कार के बारे में अगर बोलता हूँ तो कई लोग गर्भ संस्कार करने वाले शायद जुड़ गए होंगे इस वेबिनार में। और शायद सोचेंगे कि ये बंदा कौन है कि जेन्युइन गर्भ संस्कार सिखाने आया है, और हम लोग जो कुछ कर रहे हैं वो क्या जेन्युइन नहीं है क्या? तो ऐसी बात नहीं है। मैं गर्भ संस्कार का बहुत दिनों से मतलब देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कुछ ना कुछ स्टडी कर रहा था बहुत सालों से। एमडी होने के बाद गर्भ संस्कार ये क्या है, क्योंकि बड़ा अट्रैक्टिव शब्द है गर्भ संस्कार। बोले तो गर्भ में, गर्भाशय में रहते हुए गर्भ के ऊपर किए जाने वाले संस्कार तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। और मैंने बहुत ढूंढा, बहुत जगह, बहुत वेबसाइट्स, बहुत एप्स और नेट पर इधर उधर जो वर्ग चलते हैं गर्भ संस्कार के बहुत सारे देखे, लेकिन मेरा मन कुछ सेटिस्फाई हुआ नहीं। क्योंकि जब मैंने देखा कि उसमें 3-4 चीजें कॉमन रहती थी, जैसे कि योगा करना है और कुछ म्यूजिक सुनाना है पेशेंट को, गर्भवती जो भी हो उनको, और फिर प्राणायाम सिखाना है, और कुछ दवाएं जो आयुर्वेदिक है, डेफिनेटली दो ड्रग्स आर इफेक्टिव, बट वो देनी है, और ध्यान सिखाना है, और ज्यादा से ज्यादा बस्ती देना है। बस गर्भ संस्कार में यही चीजें आती थी जब मैं देखता था, और सेटिस्फाई नहीं होता था, क्योंकि ये गर्भ संस्कार तो नहीं हो सकते। क्योंकि हमेशा जहां जहां मैंने देखा तो 2-4 उदाहरण हमेशा दिए जाते थे, जैसे कि शिवाजी महाराज को जीजाबाई ने बहुत सारे गर्भ संस्कार दिए, और अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए वो चक्रव्यूह का भेद सीखा,
फिर बाद में उसकी माता को नींद आ गई तो बाहर आने का नहीं सीख पाया, और ये सारी पुराण की बातें हैं। पता नहीं उसमें बिलीव करना चाहिए। सर तुम्ही म्यूट झालात सर, तुम्ही आवाज तुमचा हे करा. येतोय आता? हाँ ठीक है सर, कंटिन्यू करा प्लीज. ओके ओके. तो पता नहीं इसमें बिलीव कोई कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं, और उसका कोई खास सबूत भी नहीं है. तो मैं ज्यादातर बिलीव करता हूँ कि जो आजकल की साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है उस हिसाब से रिसर्च करना चाहिए, उस हिसाब से गर्भ संस्कार के बारे में कुछ बोलना चाहिए. नहीं तो होता क्या है कि आजकल राज तो सब एलोपैथिक का चल रहा है, तो आयुर्वेद को कोई ऐसे भी पूछता नहीं है. और आयुर्वेद वाले अगर उसका एक तरह से बोले तो अगर उसका बिजनेस बनाए कि आपने अभिमन्यु का उदाहरण सुना, और छत्रपति शिवाजी महाराज को उसकी माँ ने जैसे संस्कार दिए थे, पेट में रहते हुए भी पता नहीं किसी को क्या संस्कार दिए थे. वो योग पता मुझे नहीं लगता कि जीजा माता कुछ योगा करती थी या कुछ संगीत सुनती थी, ऐसा कोई ऐतिहासिक एविडेंस है. तो फिर भी ये उदाहरण दिए जाते हैं, और बाद में उनको कहा जाता है कि आपका बच्चा अगर आपको तेजस्वी होना चाहिए, ओजस्वी होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सर्वगुण संपन्न, आज्ञाकारी और सर्वगुणवान, शक्तिमान, बुद्धिमान, ये वो सब होना चाहिए. तो उस तरह से होता नहीं. मैंने किसी को देखा नहीं आज तक कि गर्भ संस्कार जो, और उदाहरण दिए जाते हैं बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े ऐतिहासिक महापुरुषों के उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कि विवेकानंद, स्वामी शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, अभिमन्यु, और इनके उदाहरण दिए जाते हैं. तो आजकल मतलब पिछली 15 सालों से मैं गर्भ संस्कार देख रहा हूँ, कोई ऐसा पैदा तो हुआ नहीं महापुरुष जिसकी माँ ने गर्भ संस्कार किए हो. तो ये है क्या? तो फिर मैंने थोड़ा इधर उधर पढ़ाई शुरू किया कि क्या है, देखने लग गया. कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा था. फिर सडनली मेरा भाई, बाय द वे मेरा भाई साइकियाट्रिस्ट है, तो मैं देखता था उसके पास बच्चों को लेके माएँ आती थी, बच्चों के बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती थी, और साइकियाट्रिस्ट तो बच्चा पढ़ाई नहीं करता, और कॉमन प्रॉब्लम्स लाइक एडीएचडी, ऑटिज्म, ये सब बच्चे आते थे. इवन प्रेगनेंसी में मैं देखता था कि अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम्स आती है, पीआईएच होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता है. तो ये सब सोचते सोचते मैं सचमुच कह रहा हूँ, मैं पूरी तरह से मतलब थक गया था कि ये क्या है क्या. गर्भ, एक्चुअली आयुर्वेद में गर्भ संस्कार नाम का कोई शब्द तो है नहीं किसी आयुर्वेद के ग्रंथ में, लेकिन जिस किसी ने भी वो कॉइन किया हुआ है शब्द, बहुत सही किया है. गर्भ संस्कार वर्ड इज वेरी नाइस वर्ड. बस बट some years ago I got an opportunity to attend a international conference where all the big people like giants from all over the world, from Europe, America, Canada, Brazil, ऐसे सब आए थे. और उन्होंने गर्भ संस्कार के बारे में, वहां पर वो लोग प्री नेटल पेरेंटिंग कहते हैं उसको, और ये शब्द भी मुझे बहुत सही लगा कि प्री नेटल पेरेंटिंग. और उसमें ज्यादा करके डॉक्टर थॉमस वेरनी, हु इज वेरी फेमस फॉर प्रीनेटल पेरेंटिंग, ही इज अ साइकियाट्रिस्ट. डॉक्टर डेविड चेम्बरलेन, हु इज अ ऑब्स्टेटिशियन एंड ही इज वर्किंग इन दिस प्रीनेटल पेरेंटिंग. तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और उसका स्टडीज जो था वो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी सब उनका स्टडी था. तो वो सब देख के मैं इतना इम्प्रेस हो गया कि बस मैं फिर वेबसाइट पे वही ढूंढता रहा, और जितना कुछ मुझे मिला मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की. और उसमें जो भी मैं पा सका, जो भी मैंने नॉलेज गैदर किया है, वो थोड़ा शेयर करूंगा. आज का टॉपिक ज्यादातर न्यूरोलॉजी के ऊपर है. तो बच्चे की न्यूरोलॉजी और माँ की भी न्यूरोलॉजी. तो एक बात तो है कि बच्चे को अगर आपको सुसंस्कृत बनाना है, बहुत सारा, जैसा मैंने कहा, तेजस्वी, ओजस्वी, सर्वगुणवान, ऐसा अगर बनाना है, तो पहला पॉइंट, मेन पॉइंट आता है कि उसमें बच्चे को
बच्चा जो बनता है वो या तो प्राकृत बनेगा या विकृत बनेगा। अगर वो विकृत बनता है तो उसको संस्कार की कोई आशा नहीं रहती, तो विकृति की दुरुस्ती करनी पड़ेगी। और इफ इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, अगर प्राकृत बनता है तो उसको चांसेस है कि कुछ संस्कृत भी बनाया जाए, सुसंस्कृत बनाया जाए। तो बच्चा प्राकृत बनना बहुत नेसेसरी है, जो कि आजकल के दिन में आजकल की लाइफस्टाइल में बच्चा प्राकृत बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गर्भ संस्कार मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज नहीं है कि बच्चे को सीधा बुद्धिमान ही बनाया जाए या तेजस्वी ओजस्वी ही बनाया जाए। पहले उसको प्राकृत तो बनाए, पूरी तरह से प्राकृत, 100%, as far as possible, near to 100% प्राकृत। ऐसा अगर बच्चा बनता है तो बाद में फिर उसको सुसंस्कृत, डेफिनेटली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, mindfulness and all these things definitely work, but when these things will work is if the baby is absolutely normal, mainly neurologically normal। तो मैंने सोचा कि पहले न्यूरोलॉजिकली उसको नॉर्मल होने में क्या अड़चने हैं वो पहले देखनी चाहिए। तो गर्भ संस्कार का फर्स्ट एम होना चाहिए कि उसको न्यूरोलॉजिकली, क्योंकि आज का सब्जेक्ट न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है तो मैं न्यूरोलॉजी बोल रहा हूँ, तो न्यूरोलॉजिकली उसको पूरी तरह से नॉर्मल बनाने की कोशिश की जाए। फिर उसके बाद सोचे कि उसको अभी सुसंस्कृत बनाने के लिए और भी बुद्धिमान बनाने के लिए क्या किया जाए। तो गर्भ संस्कार एक्चुअली बाद में आता है। फर्स्ट आता है प्रीनेटल पेरेंटिंग, अच्छी तरह से उसकी पेरेंटिंग हो जाए जब बच्चा गर्भ में हो। तो मैं पहले 2-3 चीजें बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे का सब YouTube માં જોઉં છે, Facebook માં વિડિયો જોઉં છે। हेलो, am I audible? Yes sir, continue। ओके ओके। तो पहले मैं 2-3 चीजें बताऊंगा जो कि which are very important for understanding the next topic। So first thing is, at the time of delivery, the brain of the baby is of the size of 25% of that of the adult। तो adult के हिसाब से 25% साइज रहता है बच्चे के ब्रेन का, न्यूबॉर्न बेबी के, और उसके बॉडी का जो साइज रहता है वो रहता है 5% ऑफ द एडल्ट बॉडी। सो इसका मतलब बच्चे का ब्रेन जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रो होता है। फ्रॉम द बिगिनिंग इट ग्रोज वेरी फास्ट एंड एट द बर्थ इट इज 25% ऑफ द एडल्ट ब्रेन, मतलब कि 5 टाइम्स बड़ा रहता है बॉडी के हिसाब से। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज, I read a very nice sentence, when the baby is in the womb, whatever experiences the baby gets in the womb, that shapes the brain of the baby, and when the baby comes out, whatever the way the brain is shaped out, it shapes the experiences। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्सपीरियंस हो, सपोज आपका बॉस आपको डांटता हो, तो जो रिएक्शन आपकी होती है तो वो ब्रेन डिसाइड करता है, ब्रेन तय करता है कि कैसी रिएक्शन देनी है, अगर कुछ गलती हो या ना हो, जो भी हो, एक्सप्लेनेशन कैसे देना है। तो सिचुएशन, द एक्सपीरियंस इज shaped by the brain after birth, but before birth the brain is shaped by the experiences that it gets in the womb। so womb में वो क्या ऐसे experiences लेता है, तो वो सब experiences लेता है। after 6 months baby's all the senses are working। for example, it can see, it can listen, it can smell, it can get touch sensation, and even it knows the taste। so 5 सेंसेस वर्किंग होते हैं गर्भ में, तो उस हिसाब से उसको एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं। तो और एक्सपीरियंसेस जो है वो उसका ब्रेन को शेप करते हैं। और तीसरी बात है कि बच्चे का ब्रेन जब डेवलप होता रहता है तो वो इतना फास्ट डेवलप होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उसका स्पीड क्या है। जो सेल्स न्यूरोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, जो सेल्स बनते रहते हैं, वो the rate is 2.5 lakhs per minute। 2.5 lakh cells are created per minute in the brain of the baby। so आप इमेजिन कर सकते हो, एक तो पहली जो नर्व सेल है, it appears on the 14th day of the
कंसेप्शन, मतलब कंसेप्शन के बाद 14वें दिन पहली नर्व सेल क्रिएट हो जाती है, जबकि उस माता को पता भी नहीं है कि नर्व सेल बन चुके हैं, अभी ब्रेन बनने वाला है, प्रेगनेंसी है वो भी उसको पता नहीं, तब उसका ब्रेन बनना चालू भी हो जा चुका है। और नाउ यू कैन इमेजिन 2.2 लाख सेल्स पर मिनट इज द रेट। नाउ मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ये स्पीड कितना है अंदाजा लगाने के लिए। समझो आप 1 से लेके, इफ यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 1 billion, and suppose your speed is one number takes 1 second, so it will take 1 billion seconds to count from 1 to 1 billion. So 1 billion seconds means 32 years. So only to count 1 billion you will take 32 years. And if you decide to count up to 100 billion, then that will take 3,200 billion, 3,200 years to count, only count the numbers. If you count one number for 1 second. Now suppose you increase your speed and you can count 5 numbers per second. Even then, to count 100 billion, you will take 640 years to count 1 billion numbers. So ये जो इतना बड़ा टाइम लगता है, वो सब काम 9 महीने में पूरा हो जाता है। 14वें दिन से लेके अगले 9 महीने तक ब्रेन जो बनता है उसमें there are 100 billion of cells. So now we can understand the speed the brain is forming. Chronologically, brain development and then the factors affecting the growth of the brain. We will see them in short. Just give me a second. Yeah. So पहले 1.5 महीने में this is about the formation of fetal brain. पहले 1.5 महीने में ज्यादातर सब डॉक्टर जानते होंगे, न्यूरल ट्यूब नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है पहले। तो न्यूरल ट्यूब जो है पहले 1.5 महीने में बन जाती है। 14वें दिन फर्स्ट न्यूरल सेल अपीयर होती है और उसके बाद के 1.5 महीने में, मतलब 45 डेज में पूरी न्यूरल ट्यूब बन जाती है। पहले 3-4 हफ्ते में आपको पता है 3 लेयर्स होते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म. So the ectoderm forms the neural plate. Then there is a groove on the neural plate and it turns inside from both the sides and forms the neural tube. Then the neural tube is gets differentiated into 2 types of cells. One is brain cells and the other is the cells of the rest of the nervous system. So that is differentiation. ये ज्यादातर सेकेंड मंथ में, मतलब 8th वीक तक चालू हो जाता है। उसके बाद जो ब्रेन बनता है उसको सेकेंड मंथ में उसको हेमिस्फीयर बनते जाते हैं। मतलब कि 2 ब्रेन के जो 2 हेमिस्फीयर्स है वो ज्यादातर सेकेंड मंथ में बनना शुरू हो जाता है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। और फिर उसकी डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन शुरू होता है। मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। पूरा जो नर्वस सिस्टम है एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उसके 4 पार्ट्स बनते, सबको पता है, लेकिन मैं आई जस्ट रिवाइज एंड जस्ट गो थ्रू। सो सबसे पहले बनता है आगे का फोर ब्रेन, फिर होता है मिड ब्रेन, फिर होता है हिंड ब्रेन और फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो फोर ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट कंटेन्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स व्हिच इज अ स्पेशलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शंस जो है वो ज्यादातर इट कंट्रोल्स द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इट क्रिएट्स द थॉट्स, इट हैज द मेमोरी and it has a capacity of problem solving. Then the midbrain is only a neural relay station for sending the information from the body
to the various sites in the brain. Then उसके बाद जो है पीछे वाला hind brain controls most of the physiological processes which is well developed in all the other animals like heartbeat or respiration. These processes are controlled by the hind brain. And spinal cord is just a pathway for conveying the information between the brain and the rest of the body. So within 4 to 8 weeks ये सब बनता रहता है और then the face becomes recognizable and the cerebral cortex start forming and the two hemisphere as I said. So 2 महीने में कहीं तो पेशेंट आते हैं ओपीडी में तो उसको 2-2.5 महीने 3 महीने हो चुके रहते हैं, उसको पता ही नहीं अंदर ब्रेन बन रहा है और इतना बड़ा बन चुका है. तो now I will just tell you the stages. 3 stages are there. One is from 8th week to 26th week, where the cerebral cortex forms and it covers the whole of the midbrain. 26th week, that means 6 महीने, 6-6.5 महीने. उसके बाद up to after 28th week, up to 28th week, the cerebral cortex starts growing because the skull is small and the cortex is growing, so there is no space for grow outside. So the sulci and gyri, as you know, उसमें जो दरारें रहती है और ऊंचाइयां रहते हैं, sulci जिसको बोलते हैं और gyri बोलते हैं. I think most of you know this. So sulci and gyri बनते हैं और brain ऐसे convoluted बन जाता है, cerebral cortex particularly. And then there is a vast neural network starts forming, which makes the brain capable of being a central control and the processor of the information. So ये दो चीजें बहुत ही important है. One is neurogenesis and the other thing is more important, which is called neural migration. Migration चीज ऐसी है कि जो ब्रेन का पार्ट रहता है, मतलब समझो फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन बन गया, तो जो इनरमोस्ट पोर्शन है वहां पे न्यूरल सेल्स फॉर्म होते हैं एंड दे ट्रेवल. देयर इज वन अनदर काइंड ऑफ सेल कॉल्ड ग्लायल सेल which work as a ladder. It is called as a cortical ladder. That is a more deeper subject. So these newly formed nerve cells climb over that rope like glial cell and go to their destination. The cells are genetically programmed, so they know what is their function. So they travel along the glial cells and reach at their destination and acquire the attributes of that particular center of the brain. So this is how the brain is formed. Now ऐसे एक तरह से यहाँ से सेल्स न्यूरोजेनेसिस होता है, फिर न्यूरल माइग्रेशन होता है और एक लेयर बन जाता है कॉर्टेक्स का. फिर न्यूरोजेनेसिस चालू रहता है, फिर वो माइग्रेट होते हैं, अपने अपनी जगह चले जाते हैं, फिर दूसरा लेयर बनता है. जैसे ओनियन के अंदर एक लेयर्स रहते हैं ना, वैसे कॉर्टेक्स के अंदर लेयर्स बनते जाते हैं और ब्रेन बनता जाता है. और फिर जहां पर वो पहुंचते हैं तो उस एरिया के अनुसार वो वहां की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर कर लेते हैं. तो ये इन शॉर्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन है. उसके बाद जो होता है वो ब्रेन में कनेक्शन होना शुरू जाता है. ब्रेन सेल, आई शो यू अ पिक्चर जस्ट नाउ. मैडम प्लीज वो ये वाला ब्रेन सेल वाला एक पिक्चर है. Yeah, I am sharing just. Yes, I am sharing your PPT. Yeah. Next. Yeah, sir. This one is okay? Yeah. This No, one? the previous one. Okay. Yes. So this is a brain cell on one side, and the other side there is a synapse. It is called synapse because the dendrites is some
छोटे अंकुर जैसे निकलते हैं, ब्रांचेस निकलती है सेल बॉडी को। यहाँ पे वो सेल बॉडी है मेन, उसके बाद जो लंबा डंडा दिख रहा है वो एक्सॉन है, और वहां पर पीछे भी डेंड्राइट्स है। तो एक सेल दूसरे सेल से, डेंड्राइट्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द डेंड्राइट्स ऑफ द एक्सॉन, देन अगेन इट इज कनेक्टेड विद द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट सेल बॉडी, एंड ऐसे एक लाइन, मतलब एक सर्किट बन जाता है। और ये जो दूसरी पिक्चर में दिखा है वो सिनेप्स है, मतलब दो नर्व सेल्स जो है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं लेकिन चिपकते नहीं है, उसमें गैप रहती है, और उस गैप में न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं। सो इट इज another subject altogether. So the synapses get started forming, and that is called as synaptogenesis. तो इसका मतलब सीधा है कि ब्रेन जब डेवलप होते रहता है तो वेरी फास्ट एंड वेरी स्पीडीली उसका डेवलपमेंट होते जाता है, और जब माँ को पता भी ना हो। और वन मोर थिंग, एवरीथिंग दैट द मदर डज ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी अफेक्ट्स द फीटल ब्रेन। कैसे, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगता है वो लेके मैं आपको बता दूंगा। तो ब्रेन डेवलपमेंट इंक्लूड्स list of biochemical and physiological processes. I'll just list them out. अगली स्लाइड में है शायद, या पिछली, one slide back, madam, please. No, the next slide, next to the picture. This one? नहीं, ठीक है, ये रहने दीजिए, मैं आपको ये बता दूंगा, पहले लिस्ट बता दूंगा कि एक तो ब्रेन ग्रोथ होती रहती है, दूसरा है एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग। नाउ हाँ, ये राइट। So epigenesis is one more topic which is very deep and very interesting, which is related to the genetics, and which tells that genes is not your destiny. You can change the genetic functions. So epigenetic programming हो जाता है, cells proliferation, फिर cell migration, जैसे मैंने कहा सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं जो cortical सीढ़ी, फिर differentiation of cells between according to the part where they reach the function of that part, and differentiation between brain cells and the other nervous system. Then dendritic spine formation. Spine is just वो जो अंकुर निकलते हैं डेंड्राइट सेल बॉडी से, उसको डेंड्राइट स्पाइन कहते हैं वो। फिर उसके बाद सिनेप्टोजेनेसिस, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया अभी, और neural plasticity. There is a concept called neural plasticity. We will talk about it later. And then the hormonal status, that is very important. The hormones in the mother's body 100% affects the brain of the baby. तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स है जिससे कि ब्रेन बनता है। तो अभी ये जो सब प्रोसेस है, अगर ये प्राकृतिक तरह से होती है तो फिर बाद में उसको संस्कृत किया जा सकता है, सुसंस्कृत किया जा सकता है, संस्कार किए जा सकते हैं। अगर यही प्रोसेस फॉल्टी हुई तो क्या संस्कार करेंगे? तो इसके लिए मेरे हिसाब से गर्भ संस्कार कहो या प्रीनेटल पेरेंटिंग कहो, द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन, बट द फॉर्मेशन ऑफ द बेबी to be as possible as normal, near 100% normal. तो ये उद्देश्य होना चाहिए गर्भ संस्कार का। तो इसी को मैंने ये कहा था कि जीन गर्भ संस्कार। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आजकल के लाइफस्टाइल में, तो ऐसी बहुत ही सारी चीजें हैं जो इस ब्रेन फॉर्मेशन प्रोसेस में कुछ रुकावटें डाल सकती है, कुछ उसको डिस्टॉर्ट कर सकती है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उसमें से कई का मैं नाम लूंगा। शायद नेक्स्ट स्लाइड में है, नेक्स्ट स्लाइड। मैडम वो पिक्चर वाला स्लाइड दिखाएंगे प्लीज। हेलो।
यस। हाँ हाँ, वो पिक्चर वाला थोड़ा दूसरा पिक्चर जो था। हाँ, एक मिनट, ये इज इट ओके? नहीं वो, हाँ ये इसमें मैंने दिखाया है कि जो नीचे वाले, ये जो आप ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें वो कॉर्टिकल लैडर दिखाया है मैंने मतलब कि सेल्स जो बनते ऊपर जाते रहते हैं और ये एक एक लेयर बनता जा रहा है। पीछे नीचे वाले जो 4 पिक्चर्स है उसमें आप देख सकते हैं, पहला एक ग्रुप फॉर्म हो गया, ऊपर गया वो नीला वाला दिख रहा है, दूसरा ग्रीन वाला गया, दूसरा लेयर, फिर पर्पल कलर का तीसरा लेयर, ऐसा कॉर्टेक्स बनता है। बस यही दिखाना चाहता था। और अब नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। Yes, yes. So there are many factors that can affect the brain. We can list them like this: uh, hypoxia, प्रीनेटल हाइपोक्सिया। सो उसके तो बहुत सारे रीजंस है कि हाइपोक्सिया मतलब डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। सो हाइपोक्सिया इंट्रा यूटेराइन हो और एट द टाइम ऑफ बर्थ हो, हाइपोक्सिया होना बहुत ही डेंजरस बात है। तो ब्रेन हाइपोक्सिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, टॉक्सिन्स है, बहुत सारी टॉक्सिन्स है, आपको अंदाजा नहीं होगा कि कितनी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में अभी घूम रही है, मैं बताऊंगा आपको बाद में। हार्मोन्स है, जो मैटरनल हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स है जो साइकोलॉजी के ऊपर असर करते हैं, जिसको हैप्पी हार्मोन्स और बैड हार्मोन्स कहते हैं। फिर प्लेसेंटल डेफिसिट, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग, प्लेसेंटल डेफिसिट, प्लेसेंटा का ठीक से न्यूट्रिशन ना हुआ हो या प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी बोलते हैं जिसको। फिर मैटरनल स्ट्रेस, this is the thing which we are going to talk about in details. Maternal stress. Poor nutrition is a very common problem in India. Then habits like tobacco, alcohol, caffeine, many more drug abuse are there. So सबसे पहले देखिए, अभी ये जो मैंने लिस्ट दी है उसमें से हम लोग 3 ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि इफ मैंने कहा हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया के अंदर पुअर न्यूट्रिशन भी आता है, प्लेसेंटल डेफिसिट भी आता है, और मैटरनल स्ट्रेस भी आता है, और इन्फेक्शन भी आता है। दूसरी चीज है टॉक्सिन्स, तो टॉक्सिन्स में भी इन्फेक्शन आ सकता है, और अदर टॉक्सिन्स आती है, अल्कोहल, टोबैको, कैफीन, ये सारे आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है मैटरनल स्ट्रेस, जिसमें हार्मोन भी आ सकता है। हार्मोन इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैटरनल स्ट्रेस का। तो मतलब इतने सारे फैक्टर्स हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज हाइपोक्सिया, सेकंड इज टॉक्सिन्स, एंड थर्ड इज मैटरनल स्ट्रेस, राइट? Just give me a second. तो टॉक्सिन्स क्या होते हैं? टॉक्सिन्स, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिन्स आजकल इधर उधर हवा में, पानी में, खाने में सब रहते हैं। ज्यादातर टॉक्सिन्स का मतलब है केमिकल्स, जैसे कि कोई भी केमिकल, प्रिजर्वेटिव हो, कोई भी केमिकल हो। फिर होते हैं पेस्टिसाइड्स, जो हम लोग हमेशा घर में कॉकरोच के लिए, इसके लिए, अगर गर्भिणी भी कॉकरोच के लिए स्प्रे करती रहती है, बेगॉन स्प्रे, तो वो केमिकल्स उसके बॉडी में जाने ही वाले हैं। तो पेस्टिसाइड्स, certain food contains lead and mercury, like some seafood like crabs and shrimps and prawns and sharks. Certain fish contain lead or mercury, so those should be avoided during pregnancy. Then antimicrobials है, antimicrobials है, antibiotics भी है, जो कि antibiotics are meant for killing the bacteria or the organisms, but they don't know which one is the organism and which one is the normal human cell, so they kill both of them. So they are also harmful. And इसमें तो दिया हुआ है कि these penicillin and cephalosporins are safe in pregnancy,
जेंटामाइसिन इज दिस ऑटोटॉक्सिक एंड ऐसे तो दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सा एंटीबायोटिक अंदर का क्या झोल करता है। तो लेड, मर्क्यूरी, एंटीमाइक्रोबियल, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जैसा मैंने कहा, बेगॉन स्प्रे वगैरह, ऐसी बहुत सारी टॉक्सिन्स है जो शरीर में वेरी इजीली जा सकती है। तो एक यूनाइटेड स्टेट्स में 163 गर्भिणियों के ऊपर एक अभ्यास हुआ था, और उनमें से यू वोंट बिलीव दिस रिसर्च, उनमें से 98% ऑफ द फीमेल्स, दे in their blood they found more than 60 chemicals. More than 98% of the females out of 163, they found chemicals which are more than 60. अगर समझो कि अमेरिका में केमिकल का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, या यूएस का रिसर्च स्टडी है, अगर अमेरिका में ज्यादा हो रहा हो, इंडिया में 50% भी हो रहा हो, तो भी कम से कम 30 केमिकल्स तो हर गर्भिणी के शरीर में घूम ही रहे होते हैं। तो इसका तो मतलब you have to take care of this. I'll give one example. There is a chemical which is called as bisphenol A. वो जो bisphenol A है, शायद स्लाइड है इसकी bisphenol A की, इसके आगे वाली शायद, हाँ मैडम, हेलो, नहीं नहीं नहीं, बंद कर दो स्लाइड, में बताऊंगा। सर बंद करूं? हाँ स्लाइड बंद करें। ओके ओके, थैंक यू। तो एक केमिकल है जिसका नाम है बायस्फिनॉल ए। ये किसी भी प्लास्टिक में रहता है, किसी भी प्लास्टिक में। मतलब गर्भिणी अगर सोचे कि वो मिनरल वाटर पी रही है तो इसका मतलब बहुत ही सेफ वाटर पी रही है, तो नहीं है, उसमें बायस्फिनॉल ए है। और अगर वो बोतल ज्यादा टाइम तक इफ इट रिमेन्स इन द सनलाइट, धूप में रहती है, तो बायस्फिनॉल ए विल इंक्रीज इन द वाटर। सो ऑल द कैंड फूड्स, कोई भी फूड जो भी प्रिजर्व किया हुआ हो प्लास्टिक बोतल में या प्लास्टिक कंटेनर में, उसमें बायोस्फिनॉल ए रहेगा। और बायोस्फिनॉल ए हैज इफेक्ट, स्टडीज से that it can cause abortions, and even it also can lead to infertility. So that much of harmful this bisphenol A is. तो आप या तो फिल्टर वाटर पिए, टैप वाटर फिल्टर करके बॉईल करके पिए, या फिर वेल का वाटर अच्छा रहता है, नेचुरल रहता है, वो पिए। लेकिन ये मिनरल वाटर या प्लास्टिक में कंटेन किया हुआ, प्रिजर्व किया हुआ फूड ना लीजिए तो अच्छा है। तो ये जो कंक्लूजन है कि बायोस्फिनॉल ए कैन कॉज अबॉर्शंस एंड इट मे लीड टू इनफर्टिलिटी, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कंक्लूजन है, तो कोई इसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता है। दूसरे टॉक्सिन्स तो बहुत ज्यादा है, जैसे कि फैक्ट्री में से जो फ्यूम्स और जो स्मोक निकलता है उसमें टॉक्सिन्स है, सिटीज में तो रहता ही रहता है। व्हीकल्स में ये जो द स्मोक दैट कम्स आउट ऑफ द व्हीकल्स, दो दैट इज वेरी टॉक्सिक, एंड ये बड़ा टॉक्सिन का सोर्स है, व्हीकल्स और फैक्ट्रीज। एंड रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट babies of the mothers who are living in the polluted area have a lower IQ than those who are staying in a clean area like in countryside villages. So ये तो सीधा सीधा सबूत है कि पोल्यूशन की वजह से बच्चे के IQ के ऊपर भी इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद एक और रिसर्च बताऊंगा, न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन न्यूयॉर्क, उसमें एक जिनकी जो गर्भिणियों की डिलीवरी की तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है, तो ऐसे 250 फीमेल्स पर स्टडी किया गया। ये जो ऑल फीमेल्स वेर फ्रॉम लोअर इकोनॉमिकल क्लास और लोअर क्लास, एंड इवन देयर income and education were also taken into consideration, and conclusively the children born were found to be poor in the academics, poorer than the
people, the Garbinis staying in a better area and with lower pollution. So pollution is one factor which is very important and that should be taken care of. अगर आप बहुत polluted area में रहते हो और सुबह शाम योगा करते हो और म्यूजिक सुनते हो तो उसका pollution के ऊपर कोई असर होने वाला है नहीं. तो before doing yoga and प्राणायाम and ध्यान and कुछ संस्कृत क्या बोलते हैं उसको, चैंटिंग, तो उसके बदले पहले एटमॉस्फेयर और टॉक्सिन्स दैट दोज आर गोइंग इनटू द बॉडी शुड बी टेकन केयर ऑफ फर्स्ट. दैट इज व्हाट आई थिंक व्हेन आई यूज द वर्ड जेन्युइन गर्भ संस्कार. तो टोबैको, उसके बाद टोबैको, इंडिया में टोबैको खाने वाली फीमेल्स बहुत ज्यादा, यहाँ पे कोकन एरिया में तो बहुत ज्यादा है. और टोबैको, आप सबको पता है कि टोबैको कैन कॉज अस्थमा, लो आईक्यू एंड कॉग्निटिव फंक्शन डेफिसिट. लाइक कॉग्निटिव फंक्शन मतलब उनकी आकलन शक्ति कम होती है बिकॉज द मदर इज कंज्यूमिंग टोबैको. अल्कोहल पीने वाली महिलाएं भारत में तो मेरे एरिया में तो ज्यादा मिलती नहीं, कभी मिलती ही नहीं. मैंने कोई अल्कोहलिक पेशेंट को ट्रीट नहीं किया आज तक, लेकिन fetal alcoholic syndrome is very famous. There you can get mentally retarded children and whatnot. So forget about alcohol. You have to avoid alcohol drinking for the pregnant women. Now next point आता है hypoxia. Hypoxia मतलब low oxygen supply to the fetus, mainly of course to the fetal brain. तो hypoxia के कारण कॉमन है, इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से hypoxia हो सकता है. वैस्कुलर डिसीज अगर मदर को हो तो उससे hypoxia होगा. सीधी बात है, कंस्ट्रिक्टेड वेसल्स रहेंगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगी. प्री एक्लेम्सिया में तो hypoxia होता ही है, सब जानते हैं. मैटरनल अस्थमा हो तो obviously mother is having hypoxic, so fetus is obviously going to be hypoxic. और अगर severe anemia हो, suppose कि hemoglobin is 5 or 7, then hypoxia is bound to be there. So hypoxia, what hypoxia does is, if the fetus is hypoxic during the fetal period, it leads to the increased risk of neurodegeneration disorder in the later life. So ये पता नहीं चलता कि 50 की उम्र में उसको न्यूरो डिजेनरेशन क्यों होने लग गया, मेमोरी लॉस क्यों होने लग गया, तो उसका कारण होता है प्रेगनेंसी में. दूसरी चीज है, देयर आर एविडेंसेस दैट प्रीनेटल हाइपोक्सिया, specifically in the critical periods of the brain formation, is related to deficient cognitive functions, then learning disorders, then memory disorders, lack of memory, and bad effects on overall brain development. Then prenatal hypoxia decreases the ability of the brain to cope up with the environmental changes. Whenever there are environmental changes, you now from India, suddenly if you go to Sweden, there are environmental changes. So your brain is so intelligent that it copes up with that new environment. So this capacity of coping up with the changes in environment is decreased due to this hypoxia. And one more thing is neuroplasticity. It is a topic to be discussed for 1 hour at least. Neuroplasticity. Brain has a capacity to take over the functions of the damaged cells. So that is called neuroplasticity. तो neuroplasticity भी कम हो जाती है hypoxia की वजह से, fetal hypoxia की वजह से. Then neural connection and conduction of impulses. The impulses are conducted like electric neurons. So those are distorted, very important parts of the brain. Cortex is obviously the main part that controls the whole body functions, the thinking process is damaged, and hippocampus is supposedly related to the memory. So both these organs are damaged because of prenatal hypoxia. Then gene expression is it is related to gene expressions.
that is the epigenetic regulation. That is again a different topic. We will talk about it in the next lecture. So epigenetic regulation is a very important process, and that has ill effects of hypoxia specifically. So what happens is wrong kinds of proteins are formed. So abnormal cells in the brain, you can imagine what that may be. Then in the younger age, the cognitive function deficit, as I said, and the neurodegeneration is very common. There are many other effects of hypoxia. For example, oxygen sensing mechanism is disturbed. Oxygen sensing mechanism, that means when you get some hypoxia, an adult when gets hypoxic, there is the hemoglobin oxygen carrying capacity is increased, you get a higher breathing rate is increased. So these are some adjustments done by the body. So this is hampered, this is distorted, then the tolerance to hypoxia is reduced, then epigenetic consequences are there. So hypoxia has a lot many effects on the baby in its later life. So you have to take care of hypoxia. So जब मैं कहता हूँ कि genuine गर्भ संस्कार, so जो टॉक्सिन्स के बारे में मैंने बताया, या अभी हाइपोक्सिया, फीटल हाइपोक्सिया, तो उसका अगर ख्याल ना रखा जाए तो बाकी संस्कार का कुछ मतलब बनता नहीं है. अब सबसे important topic which I am very much interested in talking about is maternal stress. Maternal stress जो है वो किसी भी प्रकार से एक्सप्रेस हो सकता है, कभी-कभी एक्सप्रेस होता भी नहीं है. तो we will first take simple example. If any stress is there, what happens is the neural cells, those are from the neurogenetic center, those are migrating to its destined place. They go in the wrong direction. They do not go to their destined specific area. They go to some other site, and genetically it is programmed for some other function. So what happens is बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर गर्भिणी में हो तो these brain, if अगर लाखों करोड़ों सेल्स में ऐसा होता है कि वो अपनी गलत जगह पे पहुंचते हैं, they reach at the wrong sites, so the whole brain is formed structurally very abnormal. So if structural deformity is there, there is no cure for it, because brain is structurally like that, not functionally. So for functional dysfunction, you can give some medicine, you can do some treatment at least. If the brain is structurally wrong, you cannot do anything about it. And from that, you get patients of psychosis, psychopaths, and many other psychiatric disorders. So we will think about the stress, maternal stress. One finding एक ऐसा है कि out of the 100 pregnant women, at least 20% of them have a clinical depression. What does clinical depression means? If the patient is sent to a psychiatrist, he will diagnose her as a depressed patient and he will suggest some antidepressant drugs. That is clinical depression. So out of total garbinis, total pregnant women that we see, 20% of them are clinically depressed. This is the study in United States. Although in India also the reasons are different. In United States, the women have different causes to get depressed. In India, there are way more causes like saas, sasur, nanand, ye, wo, economical problems, social problems, and whatnot, and not having a girl, not having a boy, having a girl. So many problems are there, and these causes depression, anxiety, and so the 20% are clinically depressed and the rest of them are subclinically depressed. So almost every pregnant woman is some or the other way is depressed. So you have to take care of that. So I will insist that Garbha Sanskar is not a thing to be done on a group. So 15-20 पेशेंट्स बैठे और ये कोई बंदा उसको गर्भ संस्कार कर रहा है, ये ऐसी चीज है नहीं. संस्कार कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं.
तो योगा सिखाने के लिए या प्राणायाम ध्यान सिखाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिवली यू हैव टू हैव one-to-one communication. You have to find out the reasons for depression, or if there is any depression, the intensity of that depression, and you have to treat that first. Then comes actually the sanskar. This what I am telling about is about prenatal parenting. So you have to have communication one-to-one with every patient. So it is a subjective thing. Garbha sanskar in my opinion is a subjective thing, not a thing to be done in groups. You can teach certain things to the group, but Garbha sanskar as such is subjective, one to one. Secondly, I read a nice sentence somewhere: the fetal mental and physical growth is inversely proportional to the maternal stress. Inversely proportional. As the maternal stress grows, the physical and mental development reduces. As the maternal stress is less, the fetal physical and mental development will improve. So this stress, what does stress means? Stress means everything and anything of regarding the mind. That means depression, anxiety, fear, PTSD, that is post-traumatic stress disorder, psychosis, and so forth and so on. So stress hota kya hai? We will see a little in detail about stress. What happens when stress is there? Now suppose कोई गर्भिणी या आप अगर जा रहे हो और सामने से कोई कुत्ता आता है, जैसे कि वो अटैक करने वाला हो, बहुत बड़ा घुसीला चेहरा उसका, और वो आ रहा है अटैक करने के लिए. तो what happens is, there are, as all of you must be knowing this, there are two parts of nervous system, sympathetic and parasympathetic. So what happens is, there is a fight flight response. This response all of you must be knowing. Still I will tell a little about it. Fight flight, that means either fight or flight. Either you have only two options now. You are going to fight with the dog, attack back the dog, or you have to run away. So your muscular system, your body must be capable of doing either attacking the dog or either running away. So what happens is, the sympathetic system gets excited and the whole blood supply goes to the extremities. Power grows in the extremities, lower leg and upper hands. So the parasympathetic system, which has a control over the central line, like the alimentary canal, digestive system, and uterus, obviously, becomes relaxed and sort of non-functioning. So your sympathetic system remains active, and that causes increased blood pressure, increased heartbeat, increased respiration, and excited state of mind. सर आवाज, हाँ आवाज येत नाहीये सर, आवाज येत नाही. यू आर नॉट ऑडिबल. सर यू आर नॉट ऑडिबल. नो सर, यू आर नॉट ऑडिबल. बरी कामाला येतात ना.
बुधवारी येणार आहे म्हणजे ते या नो सर, यू आर नॉट ऑडिबल. साडे दहा एक दिवस राहते मग दुसऱ्या दिवशी घरी जाऊन इकडे येते सांगलीला नेले कमरेला सांगितलं सांगल्यावर एक दिवस घरी नेलं तर लगेच 2 दिवसात लगेच करून येते झालं तरी मी बुधवार येते तुम्हाला फोन करते मी नाही एवढं जर जास्त असलं तर मग बुधवारचे दिवस राहते असं ठीक गुरुवारी तर येतेच तुमच्यात काम मी करते रनिंग 10 मिनिटात. गुरुवारी तर येतेच मी नक्की हा जास्त जरी केलं तरी राहते आता मग बुधवार सर आवाज नाही येतच नाही. यू आर नॉट ऑडिबल. जाऊन येते एसटीला किती तिकीट आहे तुम्हाला रेल्वेला कमी जाऊ का सर तुम्ही माईक हे नाही, म्यूट म्यूट आहात तुम्ही. हे नाही, स्टार्ट नाही केलं, ऑडिओ स्टार्ट नाही केलं. यू आर नॉट स्टार्टेड ऑडिओ. ऑडिओ नॉट स्टार्टेड सर. No sir is here na in meeting. सर परत एकदा जॉईन व्हा तुम्ही लेफ्ट होऊन. ओके. हाँ सर, आता ठीक है, आता ठीक है. या. सर नो वॉइस. सर ऑडियो नॉट ऑडिबल.
Sir, unmute, please unmute yourself. हेलो हाँ, yes, please continue. हेलो ऑडिबल Yes, sir, yes, please continue. हेलो हेलो Sir, continue, please continue. You're audible. Audible, sir, continue, please. हेलो हाँ सर, आवाज येतोय, कंटिन्यू करा. येतोय आवाज? हाँ, येतोय. हॅलो कोणीतरी सांगा. विठ्ठलानी सर आवाज येतोय का? येतोय सर, येतोय. आवाज येतोय सर. कंटिन्यू करू? हाँ, येस प्लीज. कोणीतरी अंगठा दाखवा ऍटलीस्ट यार, मी कंटिन्यू करतो. ओके ओके थँक्यू. Yes, sir, yes, please continue. Yes. Please continue, please continue. हाँ तो आ रहा आवाज? Yeah, please, please. Please. Yes, yes. Okay, so what happens is a human has a tendency to keep thinking. So what that woman or that person will do is go home and keep thinking that again tomorrow I will have to go to that road, again that dog will attack me, and again I'll have to face the same problem. So what happens is there is a part in the brain called amygdala, which is related to emotions. So because of that, and because of this thinking, the sympathetic nervous system remains continuously active. So always for 24 hours there is a war situation in the body, and 24 hours there is more blood supply to the extremities and less blood supply. Parasympathetic system is less functioning or relaxed. So throughout the day there is less blood supply to the digestive tract and the uterus. So if the uterus is gravid, obviously baby will get the less blood supply. और इसका इफेक्ट ऑब्वियसली फीटल हाइपोक्सिया होता है. तो वी कैन नॉट इवन थिंक कि मैटरनल स्ट्रेस, हाउ कैन मैटरनल स्ट्रेस कैन कॉज फीटल हाइपोक्सिया, और फीटल हाइपोक्सिया के परिणाम तो हम पहले ही देख चुके हैं. तो उसके बाद एक दूसरा भी ये जो है वो इमीडिएट एक्शन वाला ये जो रिएक्शन है, it is a very immediate reaction of the body. Now there is a slow reaction which is dependent on the hormones, which is dependent on the HPA axis, that is hypothalamo pituitary adrenal cortex. So that is the axis. So उसमें क्या होता है कि समझो वही situation है. अगर कुत्ता आता है तो looking at that dog you will be frightened, and the area that is related to the emotions, whatever emotions, your anger, your fear, your agitation, whatever, so that amygdala will be active, and that will send messages to the still higher center, that is hypothalamus. So amygdala, which is emotional center, will send messages to the hypothalamus that boss, there is some problem in the body, so you better do something for that. So what hypothalamus does, it orders the pituitary gland to do something. So pituitary gland immediately releases ACTH, that is adrenocorticotropic hormone, and that adrenocorticotropic hormone reaches to the adrenal gland, and adrenal gland gives out something called as cortisol. Now cortisol is a steroid hormone, but and it is a hormone actually meant for saving the body from stress. So whenever there is anything that triggers out stress, the cortisol is in the same line, amygdala to hypothalamus, hypothalamus to pituitary, pituitary to adrenal cortex, and cortisol. So this cortisol comes out, and what that cortisol does, it tries to save the body. So obviously it does exactly what happens in the Hello, am I audible?
Am I audible? Yes, sir. Yes, you are audible. Please continue. सर तुम्ही हेडफोन घातलाय ना, त्याच्यामुळे तुम्हाला आवाज येत नाहीये. यू आर ऑडिबल क्लिअरली. ओके, आता येतोय? Yes, sir. You are audible clearly. Please continue. Okay. Thank you. So same thing will happen. Cortisol will be released in a huge entity, huge amount. Cortisol will do the same thing. Audible? Am I audible? Sir, you are audible. Please continue. Sorry. Okay, thank you. So cortisol will do the same thing. That is, it will increase your blood pressure. It will increase your heartbeats. It will increase your blood sugar. It will suppress your immune system and increased heart rate. Again, you will be in a fight-flight position. That is in the war situation. So either the immediate reaction of the body or through the hypothalamo-pituitary adrenal axis, the hormonal way, you are continuously, your body remains in the position of war. So there is more blood supply towards the extremities, less blood supply towards the center, the midline, and obviously your fetus gets hypoxiated. What happens is actually when cortisol levels are sufficiently increased in the body, so they reaches to the hippocampus, and hippocampus understands that now there are sufficient cortisol, so that can take care of the whatever problem has come. So it sends messages to hypothalamus to reduce the cortisol actually. But because only the human have the tendency of thinking, the amygdala remains activated. So in that book he says in giraffes or in any animals, this thing does not happen. Amygdala is not continuously working. So there is no more cortisol in the body. Now here what happens, in spite of hippocampus sending the message to hypothalamus that no more cortisol is needed, the amygdala sends again the message that cortisol is still needed. We are still in problem. I am in problem. The body is in problem. So again hypothalamus orders pituitary orders adrenal gland, and the same cycle keep continuing, and the female remains in the stress. So the most important thing during the pregnancy is to keep the female out of the stress. So every pregnant woman that comes to you is under stress, and her body is in the state of war, and she is fighting with that flight reaction, and you have to calm her first instead of teaching her what to eat, what not to eat, do yoga, do this, do that. Try to solve out her problems, because now anyone can easily ask, was not Jizamata in a stress? Her husband was in some other Adil Shah or somewhere, and her son was, she was pregnant and husband was not near. Was she not in stress? Yes, definitely, she was in stress. And still, how can she give birth to someone like Shivaji Maharaj? That is because her amygdala was not interested in herself. Her amygdala was interested in the nation. So she was all the time thinking about what will happen to this Maratha Raj and all. That is why the amygdala did not continue to send messages to increase the cortisol. That is why even being under the stress, she was not always in the war situation. That is why Shivaji born. So you can explain these ways. This is just my personal thinking. So you can explain anybody, any big personality in this way. So this maternal stress, this was all about the maternal stress. Now we will look into the effects of maternal stress, which are even more than even 25 or more. I have listed some 20 effects of maternal stress. Stress in the form of anxiety, depression, psychosis, any post-traumatic disorder, any stress, any kind of stress, physical stress, but mainly the mental stress. So we will just go through the list of the effects of maternal stress on the fetal brain, and we will end up there. So the first thing is regarded with the gene regulation.
Now I won't go into much details about gene regulation and the epigenetic process. But one thing, as I said, gene is not your destiny. Your genes can be controlled. Your genes can be manipulated with epigenetic process. And this manipulation, the Garbhini Paricharya given in Ayurveda, you will find many things that is those are causing these manipulations of genes and helping the epigenetic regulation of the genes. So one thing is gene regulation is disturbed. Secondly, the neurons migrate and settle down at the wrong destination. So the brain is structurally faulty. These are the effects of maternal stress, only maternal stress. The third is the neurons, those are forming, get wear and tear or some sort of destructed or degenerated during formation. The now synapses is a very important process in brain formation. Dendrite from one axon and dendrite from the next cell body. There are these synapses, and for example, suppose you do certain thing many more times. Suppose you ride a bicycle. When you ride a bicycle, the synapses and the circuit is formed. It is called the neural assembly. So the assembly is formed in the brain. So now you don't have to think how to drive a cycle, how to ride a cycle. Without thinking, your brain works. You catch hold of the handles, you put the pedals, and you can easily ride the cycle without thinking. You think that you are not thinking, but the brain is thinking and the circuit is activated. So these synapses should be very strongly formed. If the synapses are fragile, then those will be break down anytime, and whatever the baby has learned in the womb or outside the womb can easily be deleted or sort of erased. So there is a destruction of neural synapses. Then amygdala, which is a center of emotions, and hippocampus, which is a center of, supposedly it is a center of memory. Actually, the exact center of memory has not yet been found, but amygdala is, hippocampus is supposed to be the center of memory. Proofs have been found. So these two centers are have a disorganized relation. Just as I said, hippocampus is sending one signal and amygdala is sending some different signal. So the baby's memory cannot develop. So baby has a very weak memory because of the maternal stress. Again, now the sixth is dendrites formation becomes deficient. Dendrites formation means when there is a cell body, छोटे छोटे ऐसे अंकुर निकलते जाते हैं जिसको dendrites कहते हैं. So if those dendrites, the more the dendrites, the more will be the connections. So they will be deficient. So less dendrites, less neural connection, less neural assemblies, and less overall capacity of the brain. So this was the sixth one. Then what happens is, because there is a large amount of cortisol in the body, not in the maternal body, but the fetal body, the brain mein jo, the receptors of cortisol in the brain are decreased in number. So what will happen whenever there is the increased level of cortisol? वो बच्चा जब बड़ा होता है, तो whenever there is increased level of cortisol, there should be receptor in the brain for the cortisol to know that cortisol is much more and that should be decreased. So these receptors are very less in his brain, his or her brain. So the cortisol levels does not come down very easily. So cortisol levels, if the cortisol levels are high for much more time, the body is in the war situation for more time. So that person is somewhat anxious, frightened, disturbed, agitated. That is because of the lower number of cortisol receptors in the brain.
then the brain's ability to handle any stress appreciably decrease. Obviously, it cannot face or handle a situation which creates stress in the body. The fetus after birth, then the serotonin levels are sharply decreased in this particular fetal brain. So there is basically there is less amount of serotonin in the brain. Serotonin is a happy hormone. It is a hormone of happiness. If there is increased serotonin, you become happy. So it is all a game of hormones and neurotransmitters. So if some person has basically deficient serotonin, how that person are going to be a happy person? So he will be in depression. He will need serotonin increasing SSRIs and antidepressant drugs. Then brain ka weight kam ho jata hai. The weight of the brain of the stressed mother will be lesser than the normal brain. Normal weight brain is supposed to be I think 1200 to 1300 grams. Only Albert Einstein had a heavier brain. I think I have heard somewhere, and he had some 1500 grams of brain. So brain ka weight kam ho jata hai, to obviously brain ki capacity kam ho jati hai. Then the size of corpus callosum. Corpus callosum is a part which joins the two hemispheres of the brain. So uska size kam ho jata hai. Now I'll let you know something interesting about this corpus callosum. Corpus callosum जो है वो फीमेल्स में बड़ा रहता है, थोड़ा मोटा रहता है, और मेल्स में कम रहता है, स्मॉल साइज रहता है. तो उससे होता क्या है कि फीमेल्स कैन एट ए टाइम यूज बोथ द ब्रेन हेमिस्फीयर्स एंड मेल हैज अ लेस कैपेसिटी टू यूज बोथ द हेमिस्फीयर. इट कैन use only one of them more efficiently. So men are more analytical and what you can say, they can focus only on a few things. They cannot be multitasking like females. This is just on the way I just telling this information. Then the next problem is fetal cerebellum is also not developed well. Cerebellum is जिसको हम लोग छोटा बिंदु कहते हैं, छोटा ब्रेन, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? So cerebellum is a part of the brain, so that is not well developed. Now, if cerebellum is not well developed, it has found that somehow this undeveloped cerebellum is related to autism. So the stressed mothers' children have, of course, more chances of getting autism. Then oxytocin is lesser in the amount. Now, oxytocin is again a hormone of happiness and hormone of love. So whatever the bonding should be there between mother and the child, bonding and attachment, that depends on the oxytocin. So oxytocin is less than normal. So the baby cannot really get attached to the mother, and the mother cannot really has a good bonding with the fetus, with the child. And secondly, all of you know that oxytocin is required for secretion of breast milk. So that will again be less, and lack of breast milk, that is again another different topic to talk about what breast milk actually does in the fetal, I mean in the baby's child's development. Then vasopressin is becomes less when maternal stress causes less amount of vasopressin. What is vasopressin? Vasopressin is the antidiuretic hormone. So that has again another many more mental effects also on the mother and on the baby. So rather we will keep that to discuss in the next lecture. So vasopressin is less. So the pregnant woman a fantastic finding has been found in research done in the Stanford University, United States, that if the pregnant woman is throughout the pregnancy, if she is under stress, what happens is if the fetus is a female child, it will become masculinized. मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं. मस्कुलिनाइज मतलब पुरुषों के जैसा उसका स्वभाव और थोड़ी सी
बॉडी फिगर भी बन जाती है. And if it is a male child, it will become feminized. So some we can see in the society some feminized males and masculinized females. So maybe maternal stress throughout the pregnancy is one of the causes of this. Then it is children can cannot do much in the thing to be taken care of. The most important part of the brain that a human being has been born with is prefrontal cortex. That has the capacity to think rationally, the intelligence, and all over thinking ability. Everything depends on the prefrontal cortex. So that prefrontal cortex its development is hampered because of the maternal stress. So what happens is, just like in the animals, there is no prefrontal cortex. So animal cannot think rationally, cannot analyze things. So it has only instinctive responses. Like if you do something, if you even with love, if you go to touch a dog, it will attack you because it cannot think rationally. It does not understand that you are not harming him, you are just going to touch him because of absence of prefrontal cortex. Now, if a man's prefrontal cortex is deficient, it will definitely have those kind of instinctive responses, and these persons become criminals because they are very instinctive. If they feel like having something, they'll just go and take it. We call it a theft, or they become burglar, or criminals like rapists. If they feel like having sex with some woman, they will directly go and do that because of that animal instinct, because their prefrontal cortex is not well. So it is a known fact that criminals have lower intelligence. IQ is lower most of the times in the criminals. Then number 18th effect on the fetal brain of the maternal stress is amygdala, which is the center of emotions. So amygdala becomes so disturbed, disorganized, and irritated that the man or woman, whosoever it becomes, the fetus, it will be always एक तरह की टर्मोइल या एजिटेशन में रहता है. तो you must have seen persons who are never calm and calm. They are always some sort of active and agitation and irritable. So that is because of the amygdala, and that amygdala is disorganized because of the maternal stress during the pregnancy. Then some congenital defects like cleft lip and cleft palate, or spina bifida, or these are very common in the children of the mothers who are under stress throughout the pregnancy. And the last and 20th is the chromosome has a end which is called as telomere. Telomere is just like a cap on the a tail of the chromosome, and the more the length of that telomere, the slower is the aging process. So in the stressful mothers, the fetuses have got a short telomere. So after birth, their aging process becomes fast. So they become prematurely aged. Their looks, and a 50-year-old person will look like a 60-year-old person. So aging process is fast. So these are the effects of maternal stress. Now we have covered the effects of toxins, hypoxia, and maternal stress, and all the other things can be included in these three main things. Now, madam, to the second last slide, please. Hello. Okay, sir. Yes. So this is my take-home message.
कि गर्भ संस्कार कोई सार्वजनिक उपक्रम नहीं है. इट इज नॉट जनरलाइज्ड थिंग. यस, इट इज जनरलाइज्ड. योगा, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, mindfulness, music, and even some Sanskrit chanting. Everything has an effect on the brain, and that has scientifically been proved already. But this comes later. Before sanskar, you have to parent it first. So that is why I am telling it is not a सार्वजनिक उपक्रम. Then गर्भ संस्कार में कोई चमत्कार बनाने की आशा दिखाना बहुत गलत है. I think it has become a business nowadays, and that is the reason why I started writing those blogs on the Facebook. Because कोई भी आता है जो डॉक्टर भी नहीं होता है और बोलते जाता है कि आपका अगर बच्चा ओजस्वी बनना हो, तेजस्वी बनना हो, बड़ा बुद्धिमान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो गर्भ संस्कार कीजिए. और गर्भ संस्कार में करते क्या है, योगा सिखाते हैं, कुछ ध्यान सिखाते हैं. ऐसा सिखाने से ध्यान आता नहीं है. 2 दिन सिखाया और ध्यान करने लग गए, इतना आसान है नहीं. और कुछ कुछ एक्टिविटीज देते हैं जैसे कि पजल सॉल्विंग. I have for 15 days been searching for such activities like puzzle solving or mathematics solving. Does it helps the fetus in the womb? But no such research has done, or no such finding has been concluded up till now. Only one finding is there, that if the mother solves puzzles or works with mathematics, then the middle cerebral artery, the blood supply of the fetal brain is increased for that particular time. And that is a good thing, of course. So mother should do that, but that is not the main thing. आप कुछ एक्टिविटी सिखाओ, वो करते रहो और बच्चा बनो, बुद्धिमान बढ़ेगा, ये होगा नहीं. फिर योगा, संगीत, ध्यान आवश्यक है, लेकिन वो सब्जेक्टिव होना चाहिए. सबके लिए एक ही कॉमन प्रोग्राम नहीं हो सकता. 15-20 माओं को लेके आप कुछ सिखाए और 15-20 ओजस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान, सर्वगुण संपन्न बच्चे पैदा करें, ये कभी हो नहीं सकता है. तो बस यही आज का टेक होम मैसेज है. और लास्ट स्लाइड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैडम. थैंक यू सर. रियली इट वाज वेरी Thank you. इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग. बहुत अच्छे से आपने इस टॉपिक पे प्रकाश डाला है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आजकल गर्भ संस्कार को लेकर बहुत ज्यादा लाइक ये खाओ, वो खाओ, ये करो, वो करो, बहुत ज्यादा चल रहा है. तो कहीं जाकर अभी एक इंसाइट मिल गया नया कि गर्भ संस्कार के पहले क्या जरूरी है और मतलब किस प्रकार से किया जाए. और ये जो नेचुरल साइंटिफिक हार्मोन्स का रिलेशन आपने बताया, इट वाज रियली फंटास्टिक. तो हमें सबको समझना है, हम ऊपर ऊपर कुछ भी खा पी कर ऐसे अच्छे प्रोजेनी को डेवलप कर सकते हैं. तो ये भी तो बहुत इट्स रियली नीड ऑफ द अभी के समय में बहुत ज्यादा जरूरत है ये कंसेप्ट की कि बस क्योंकि देखा हमने ऑनलाइन मोड पे आए तो बहुत ज्यादा गर्भ संस्कार के क्लासेस एंड ऑल थिंग्स लाइक सो मच, बहुत ज्यादा ही कुछ हमने इसको अपने मन पर ले लिया, ऐसे लगा बहुत बार. तो आपने एक अच्छे से इंसाइट दिया कि रियली कि बट ठीक है, ये तो बाकी मतलब करना जरूरी है, बट हर बार इससे अच्छा संस्कार होगा ये भी नहीं है. तो और जैसे आपने रेफरेंसेस दिए पुराने, नहीं, क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, गर्भिणियों को कुछ पता नहीं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है. So I think वैद्यगण को किसी को कुछ सवाल है तो you may ask directly with the speaker. Any questions from your side, doctors? Yeah, it was a new insight to all of us really, but still any questions? If please raise your hand if you have any query regarding this fetal brain development. सर आपने जीन्स को बदला जा सकता है ये एक बताया था, so genes can be changed. So please just within 1 minute if you can. Yeah, actually, yes. Actually, genes cannot be changed. Genes are there, but they are in a very small space. So long RNA is compacted, so they are tightly bound around a protein called histone. So the genes are very tightly closed, and unless a gene is it becomes open, it cannot work. So there are some markers on that histone and that gene, which are the receptors, which are like keys.
And if that marker is attached with, there are processes like methylation, acetylation. So अगर ऐसा बनता है तो वो चाबी खुल जाती है और वो जीन ओपन हो जाता है. If that gene gets open, then only it will work. Now, suppose, for example, your father had some cancer gene in his body. So it is tightly closed. That will come in your body, definitely. You will have that cancer gene. But if you do something which can trigger that gene, then you will get cancer. Otherwise, that can remain closed. So that is epigenetic. So epigenetically, you can, it is like just switching on and switching off of the genes. Once the gene is switched off, the gene cannot work. If the gene is switched on, it works. So the good genes are there, bad genes are there. So epigenesis is the process during Garbha Sanskar. It is a process that good genes are to be opened and bad genes are to be closed, switched off. Yeah. Yes, sir. Yes. One question is there from Dr. Gautam that reading books, I think reading books and also listening the music, good type of music and adhyatma and all things are really they effective, sir? Definitely they are effective. But at least the patient, because she had given some fees to her mentor, to her doctor or the Garbha Sanskar teacher, and he gives her as a homework and she does it, but she is under stress, her body is in fight or flight reaction, and she is studying that, then that does not work. You have to make the patient calm. That is why I said you should talk to the patient. There is a I am trying to make a huge big questionnaire that can find out if the mother is any kind of stress, anything like homely stress, some economical problems, social problems. If any stress is there, you cannot solve that stress, but you can divert the attention of the mother, and you can teach her that this stress will continue or not throughout your life. But you can, these 9 months are specifically you have to attend. So mindfulness is, I think mindfulness is a technique that is far better than all these. This also will work definitely. And one more is what you call is faith, Shraddha. If you have faith, that will definitely work. But stress is the factor that you should try to reduce first. A stressful man chanting mantras and shlokas, it will not help him. Definitely not. Yes, sir. Definitely stress is the most important factor, I think. So, sir, I have one question. Namaskar, Vittalani sir. Namaskar. हाँ नमस्ते मैडम. नमस्कार सर. नमस्कार. सावंतवाडीकर सगळे दर्शन देत आहेत. सर आपने बहुत अच्छे से समझा के बताया. मुझे सिर्फ एक पूछना था कि जैसे इनिशियल जो एज रहता है उसमें एमिगडाला ज्यादा एक्टिव रहता है. एज एज एडवांसेस देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. तो मुझे ये पूछना था कि प्रैक्टिस में जब मैटरनल एज जो है उसका और स्ट्रेस का क्या रिलेशन है? डेफिनेटली अगर आती है. yes definitely है. The ideal age for pregnancy and delivery is from 23 to 28 or 26, I suppose. After that, stress factor is much more, and after that, anomalies are more. After an elderly gravida, elderly gravida have more chances of having congenital anomalies and any other problems like mental problems with the baby. That is why the markers are done in the elderly gravidas. नहीं वो तो सब जो फिजिकल के बारे में हो गया. मेरा ये कहना था कि जैसे आपने बोला कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस व्हिच इज गिवन बाय एमिगडाला, इट शुड बी मोर इन अर्ली एज ग्रुप आफ्टर 25 years of age. Yes, definitely. But it depends. Lady should think from the prefrontal cortex, and there should be a balanced reply. Yes, but that should have been formed normally, prefrontal cortex and amygdala. If there is some disorganized formation, that will not think normally, the baby. And if the mother is elderly, then there will be, it depends on the circumstances. Suppose a 35-year-old mother is pregnant and a 24-year-old mother is pregnant, then either of them can be under stress. As far as mothers are concerned, babies, it is about the formation of the brain. If the brain is formed very normally, then what you are saying is correct. Prefrontal cortex will be working more than the amygdala. You are talking about the normal brain.
थैंक यू सर। Thank you, sir. Sir, one more question. In case of surrogate mother, will the stressed mother affect the brain of the fetus? Like surrogacy अगर होती है and the carrying मतलब जो carry कर रही surrogacy उसको Yes. अगर stress है तो how it will affect that fetus, sir? Same way it will affect, because the hormones are same. Whatever hormones are increased or decreased in the mother's blood, mother's system, the same changes will be there in the fetal system. Yeah. Okay. Definitely. Yes. Any more questions? I want to ask one more question, sir. Sir, Good evening. Yes. Just wanted to know out of an interest, sir. If a mother is undergoing an hormonal therapy, suppose Dr. Vitlani sir has talked about an elderly woman undergoing pregnancy, and suppose to make that pregnancy easier, if the mother is taking some hormonal therapy, especially an artificial hormone, which have more chances of crossing the blood placental barrier. So is that going to harm that baby's mental stress also, or mental status also? yes. I can give you a reference, not right now. I can give you a reference, but these IVF babies where hormones are used far more in far more quantity, the babies are actually somewhat below normal capacity of their cognition and their intelligence. IVF babies. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. It was really nice session, and we will like to organize again one more session regarding this, or again further development of fetus. So thank you Yes, very sure, much. sure. Yes, sir. Thank you. आयुष दर्पण की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और आगे भी हम लोग ऐसे ही सेशंस करेंगे गर्भ संस्कार को लेकर, क्योंकि आज काफी कुछ जो भी हमारे कुछ मिथ्यक थे तो उसके ऊपर से थोड़ा सा मतलब एक पर्दा हट गया है, तो बिल्कुल आगे भी आपसे सुनना चाहेंगे. थैंक यू वेरी मच सर, रियली इट वाज इंफॉर्मेटिव. Thank you, मैम. Thank you, मैम. थैंक यू ऑल द वैद्यार्स. सभी को नमस्कार और सभी का धन्यवाद, आभार जो भी इस सत्र में जुड़े हैं. थैंक यू वेरी मच. शुभ रात्रि सर. Thank you. Good night. Shubha Ratri.